Good evening, everyone. Money fraud. In the today's scenario, you will find various story, various fact. Okay, someone has cheated, someone has looted. Okay, so it is the cheat or loot. It is just it is the similar word of the fraud. Loot is the one thing where somebody is access or somebody has detached money wealth from you by forcefully or etc. But fraud is that ki sometime you are aware, sometime you are not aware, but wealth is going from your side. Sometime fraud happen in your known, sometime fraud happen with unknown. But ultimate uh, ultimate thing is that the wealth is going from your way. Suppose that I have the 1 lakh rupees in my account, so I got some call, and according to that call, just I'm the hijack, or you can say I'm the digitally arrest. Okay, and whatever that they are saying, you have to transfer 10,000, you have to transfer 20,000, you have to transfer the 50,000, and all my money is transferred to that particular account, then we can say it is money fraud. So in the today's scenario, whatever you will see any news, you will open television news channel, you will find out one news, two news related to money fraud, related to wealth fraud. That's why today I have taken the topic money fraud and how you can think, how you can prevent yourself. Because if someone has attacked or someone has targeted to you, so you can save yourself from money fraud. So first of all, we have to understand what is the fraud. Fraud is the one thing where some wrong thing happened with you, that is the fraud. That you can do in intentional, or sometimes you become the emotional, or you are not aware, you become the emotional, and you think हाँ यार कुछ हो भी जाएगा. Like when we are going in Mela or someone somewhere else, and they are selling like aloo chaat, samosa, etc. Samosa is price is the 15 or 20 rupees, but in Mela they are selling around 25, 30, 40. We are aware, but we know, and we also accept ourselves कि ठीक है यार, एक बार ही तो खाना है, चलो परचेज कर लेते हैं. When we have visited bus stand, railway station, okay, cinema hall, popcorn of the 10 to 20 rupees in the cinema hall, they are selling the 200 rupees. Okay, we are aware. We are aware कि it is not a cost of the 200, but we think यार चलो month में एक बार तो आना है, ले लेते हैं यार बच्चे के नाम पर. Okay, again it is the fraud. Now you will say कि how you can say I have given the consent, because nobody is forcing to you. Agree. Nobody is forcing to you. So that I'm saying the fraud is sometimes when you are emotionally attached, you are aware, and sometimes you are not aware. So both is considered as the fraud. So there is the two kind of the fraud that we will discuss in the detail. One is the physical fraud and another is the cyber fraud. In the today's scenario, you are seeing, you are aware lots of the incidents, lots of the facts related to cyber fraud, because physical fraud is a very limited, and it was happening 10 to 15 years back, or you can say the 30 years back. Just I will give the some example. If you are you have the some memory of the 90s or before 90s, then you will find out oh, this kind of the physical fraud was the happening, and now it is the cyber fraud with help of the technology, and we are aware, because might be possible you and me are the victim of that cyber fraud, or might be possible if you and me is not a victim of the cyber fraud, we have heard a story, we have read a story, we are aware कि yeah, cyber fraud happened with someone. The ultimate thing is that when fraud is happening with you, uh, fraud is happening with you, the ultimate goal is that your money is going. Whatever I have money, whatever I have wealth, it is the lost.
then it is the called fraud. The fraud is happen with known person. Sometimes my relative, my friends, and someone known doing some fraud with me. Like anyone has started business and they are saying ki Manish, I have started one business and it will give the at least 20-25% return. Can you can you give me the 20 lakh rupees as a business loan, and within the 2 years we will provide the 20% rate of interest with you. Okay. And I have given, but due to any reason, whether he has intention or not intention, but after 2 years they have not returned, or they have returned only the principal amount, they have not returned my interest amount. Okay, then it is the fraud that you can classify that okay, it is a fraud with the known person. Another is the stranger. A stranger is a very common thing. Like you got the some phone call. Yeah, I'm calling from the this police thana, and there is the one parcel. And it is the drugs, and we are going to arrest you, etc. All those things. Okay, and we got sometime mail. Okay, your lottery has been uh, um, you can say you are lucky and your lottery is open, and you won around $10,000, $1 lakh, and we have to follow this kind of the process. Okay, then it is the fraud from a stranger. Again, I have discussed with the fiscal fraud. The fiscal fraud just now I will discuss with you. Before 90s, 1990s, 1990 से पहले what happened, it was a very less technology and telephone was the very rare home. Okay, in the small city, is telephone connection was in the one house, and nearby 10 to 20 house they are connected with each other with the single phone. In the now today scenario, yeah, everyone has the two phone and at least one phone. But that particular time, 10 houses has the one particular phone. Okay, so what so it means that communication was happening very slow, or there was no such as the technology. You can know each and moment to moment. So how happening the fiscal fraud? Housewife or any lady in home, and that particular time there was the some cash was available in every one house, like 100, 2000, 5000, 10,000, whatever the you have the financial condition. Because that particular time ATM was not here, and there was no UPI, etc., all those things. So any expenditure we have to make, that was the with the help of the money. So everyone has keeping the cash in home, like 1000, 2000, 10,000, 50,000, as per their financial condition. So in the fiscal fraud, what's happening? Someone will come in your home, and on just they will click the doorbell, and after that they will say your husband has got some accident and he is hospitalized. Can you give the 5,000 rupees? Hospital में जरूरत है, या आपका बच्चा कहीं फंस गया है. Okay, and that particular time you don't have the technology, you don't have the time to react to understand whether he's saying right or wrong. Whatever the person they have told, you have to trust and you have to give some money. Okay, so if you have given, then you lost, because that particular person received 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, whatever the money they have asked, and how much amount you have keeping in your home. So you have given 500, 2,000, 3,000, and after that, that person will not appear and that person disappear. Then it is called the fiscal fraud, and it was happening before 1990. Now after 99, 1990 के बाद it's reduces. Okay, but before 90, or you can say 1992 that it was happening, but after that it was not happening. Now it is the time of the technology fraud or cyber fraud, where when the technology has started to develop, like when first of all we got the email. Before mobile phone we got the email. So you you will recall when you have started your first email, whether it is the Rediff, Yahoo, India Times, or Gmail, anyone. So you will get the some mail from uh, some person, you got job, your lottery has opened. Okay, so this kind of the, and once you started to reply, yeah,
I am interested, yeah, give me the my amount. Okay, so they started their trap, and they are asking one detail, two detail, three detail, and after that they will say you have first you have to transfer some money, then we will trust, and we will aware about your the banking transaction, and we are aware about the trust of the bank transaction whether you have, then we will transfer. So once you have transferred the 1,000, 2,000, 5,000, whatever, then your money has lost. So ultimate I want to say कि fraud is the one with the known person and another is the stranger, and it is done physical or as well as the technology or cyber. After mail, when we have the mobile in hand, then there is the some SMS about the flashing कि there is a job, your mutual fund, your insurance, you got the some lottery. Okay, and after some time when it's come the WhatsApp, then we are getting the message, we are getting the call, we are getting the video message, and now it is the AI. In the time of the AI, we are aware कि AI can capture voice, AI can capture video of the any person, and they can provide to you. Like my son is study in the Bombay, so anyone can create the AI video and AI clip. He's in the danger, and they are need. He's saying, कि, "Papa, just give me the 20,000, 25,000, 1 lakh rupees, so I can came out from this particular problem." And I have transferred. And once I have transferred, my money has lost. So ultimately, is that we have to try to save from fraud. Otherwise, nothing else. So now you are aware what is the physical fraud that I have explained to you. Ki someone is coming to your home, office, or anywhere, and they are giving some message to you related to yourself, related to your family, related to your near and dear, and they are trying to cheat to you. That is called the physical fraud. Now, it is the time business fraud. Like my friend has started business, and he need 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, 5 lakh rupees, 50,000 rupees. And he asked to me, Manish, can you help me? And after 6 months, 1 year, I will transfer to you. And once I have the transfer, after some time, he didn't pick my phone, and he is starting avoiding to me. So it's happening with everyone, whether you are giving the money for anyone for the personal purpose or for the business purpose. But it's happening with you and me. Once we have given money, before giving money, he or she is very good. Once we have transfer money, then we become the bad. Okay, so it's the happening, and it is the nature of the human. So nobody can deny. No, Manish, you are wrong. I have given the money. I have given the 1,000, 1 lakh rupees to Mr. XYZ, and before giving the money, he was very good, and even he has received, and on the time he has returned to me. It's very difficult to find such kind of the person. If you have the such kind of the relative, yeah, friend circle, or anyone who has help to you, then you are lucky. But 90%, or you can say the 95% cases, it's very difficult to find out such kind of the problem. So when we are giving the some money to anyone, relative, friends, or anyone, so we can give as a loan, or we can give the money as a partnership form, private limited, or we are doing the some business activity, but we forget business and money rule. So today I'm going to discuss about the what is the business and money rule related to money, related to amount, so you can prevent from some fraud. Most probably today you have heard one particular news. Vikram Bhatt has been arrested by Bombay police. Vikram Bhatt is a famous film director, and he has directed film like Gulam, in which the Amir Khan was hero. Okay, so in the film world, it is also happening the lots of the fraud. In the film, they have the fraud like someone has approached to me, and he's saying, "Ki, Manish, you have the very good face and you can be the hero." So he trying to making fool to me in name of the name and fame. Someone is saying, film is a very good
thing where you make the some low investment like 1 crore, 2 crore, 5 crore, 30 crore, 50 crore, and you will earn 100 crore, 200 crore, 500 crore. In the now today we are seeing a lot of the film has earned like 100, 2000, 1000, 1200 crore. Okay, then everyone, if suppose that I have the 10 CR in the free amount, then I'm thinking, yeah, if my I prepared, I have made the one film in the 10 CR and film will hit, then I can earn at least 30, 15 CR, 20 CR. I'm not talking about the 100, 200, 500. Suppose that within the 1 year, my money is become the double, then it is ultimate. Reason is that bank is giving only 5 to 6% or 7%. Mutual fund and equity, they are providing 10%, 20%, 25%. But film, if the film becomes hit, super hit, blockbuster, then it can be 2 times, 3 times, 5 times, 10 times. Okay, and sometimes making the emotional fool, and you become the part of the money fraud. तो देर इज द वन हेडलाइन कि बुरे फंसे फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट 200 करोड़ का लालच देके 30 करोड़ हड़पने का आरोप. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस स्टडी ऑफ द विक्रम भट्ट, वे जहां पर उसने 30 करोड़ रुपया किसी बंदे से ले लिया और उसको लालच दिया था कि हम 200 करोड़ रुपया कमा के आपको देंगे. तो ये पूरी स्टोरी मैं आपके साथ लेता हूं कि व्हाट इज द सिचुएशन एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ. तो ही द विक्रम भट्ट और इनकी वाइफ है, और इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था. दे हैव क्रिएटेड द प्लान एंड नाउ बॉम्बे राजस्थान पुलिस हैज अरेस्टेड फ्रॉम द बॉम्बे एंड दे आर टेकिंग both of them in Udaipur court. What is the story? Story is that कि there is the one doctor, Dr. Ajay, and he is the founder of the Indira Founder IFB Center. तो मार्च 2024 में ही लॉस्ट हिज वाइफ, एंड उनके प्रेयर में मिस्टर अजय, डॉक्टर अजय मीट दिनेश कटारिया, एंड दिनेश कटारिया इज द मिडिल मैन इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो अजय, डॉक्टर अजय हैज द वेरी गुड मनी. ओके, तो दिनेश कटारिया हैज गिवन द सजेशन कि सर, कैन यू मेक सम बायोग्राफी ऑन योर वाइफ, सो दुनिया वर्ल्ड विल नो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और आपने सोसाइटी को क्या दिया. Then Dr. Raja, because she has the some good money like 10 CR, 20 CR, you don't have the such kind of the problem. Then he was agree कि ठीक है जी, I'm ready. Then in after 1 month, Dinesh Kataria make meeting with the Vikram Bhatt, and Vikram Bhatt, we are aware ki who is the Vikram Bhatt. Vikram Bhatt is a very famous director who has directed like film like Raj, film like Footpath, film like Gulam, film like 1920. So credential of the Vikram Bhatt was the very good. Everyone was aware कि हाँ, विक्रम भट्ट is a good director, and suppose that he has directed 30 films, so at least 15 to 20 films become the super hit blockbuster. Okay, then credential was good, so Dr. Ajay is the agree कि I can make some money. Then in the May 2025, Dr. Ajay transferred 2.5 CR in the Vikram Bhatt wife company, that is the Sutam Sutambri Bhatt. Sutambri Bhatt के account में Dr. Ajay had transferred 2.5 CR. Then it is the mistake. Reason is that film has to make. So why Dr. Ajay has transferred in the single in anybody saving account? It is the fault, because when you have to make the transfer money for any object. So first of all, you have to make some contract. You have to make some MOI. MOA. Reason is that 2.5 CR is not a small money. It is not 1,000, 2,000. कि like मैं अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गया, देन ही अरे यार मेरा फोन नहीं काम कर रहा, आई हैव लॉस्ट माय मनी, कैन यू गिव मी द 500. तो इट इज नॉट money, it is not a matter like the 500, 200. It is the matter of the 2.5 CR. 2.5 CR is always big amount, whether you have the 1,000 crore, whether it is the 5, whether it is you have the only 5 crore, but 2.5 crore is the always big amount. Okay, then what we have to learn? We have to learn कि whatever the money is going from my side. Suppose that Mr. X is coming to me and he's saying, Manish, can you give me the 2.5 CR? Then 2.5 CR is going from my side. Then it is the
For me, it is the loan or it is the expenditure, because when money is going to the only two way, I can give loan or I can take some services, for that I am making payment. So when I am making, I am giving the money for the loan, so definitely I must have the contract, I must have the एग्रीमेंट कि मैं किस पर्पज से दे रहा हूँ, कब पैसा वापस आएगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल द टर्म कंडीशन. इफ इट इज द एक्सपेंडिचर, कि समवन हैज टोल्ड मी कि मनीष, I am the expert in the cricket and your son is interested in the cricket, so I will provide the coaching to your son for the cricket. So can you give me the 1.5 CR, and after 1 year or 2 year I will return after deducting your kids coaching fee. Suppose that my kids coaching fee is the 10 lakh rupees, and he asked the 1 crore to establish some coaching center, etc. I know he can return to me. So I have transferred 2.5 CR, and after 1 year, it was the condition, it was the contract. After 1 year, he will return 2.5, 2.4 CR. Reason 10 lakh rupees is my kids coaching expenditure. So when money is going from your side, you are making help to anyone. It is the loan. So for loan, you have must have the written agreement. Now you will say कि money is 10,000, 25,000, 50,000 to दिया, and he is the relative. Everything I agree. But once you have not have the written agreement, then you have to forget your money. Reason is that when you are making the agreement with anyone, वी आर मेकिंग द एग्रीमेंट विद एनीवन, तो कहीं ना कहीं वो उस पर बाइंडिंग आती है. ही नो कि यार मैंने कुछ स्टाम्प पेपर पर लिखा है, तो कल को ही कैन गो द कोर्ट एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग, एंड दैट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस एज द प्रूफ. ओके, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ, as the Dr. Ajay has worked with a trusted name, तो डेफिनेटली विक्रम भाट बाय द ट्रस्ट नेम. तो यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर अजय ने गलत किया. हाँ, डॉक्टर अजय ने एग्रीमेंट नहीं किया और उसने अच्छे से थिंक नहीं किया कि ये पैसा कहाँ जाना चाहिए और किसको जाना चाहिए. और दोनों पार्टी के बीच में एमओयू होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कि दिस जो पैसा है कहाँ कैसे यूज हो. फिर जुलाई 2024 में विक्रम भट्ट की वाइफ ने और डॉक्टर अजय ने एक नई कंपनी खोली और दोनों का 50-50 शेयर कर लिया कि इसी कंपनी से ट्रांसफर होगा. नाउ इट इज अ गुड स्टेप कि व्हेन यू आर मेकिंग एनी बिजनेस और एनी एक्टिविटी, देन यू हैव टू मेक द ज्वाइंट पार्टनरशिप. इट इज द पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट लिमिटेड और एनीथिंग, इट्स देयर इज नो इशू. नाउ both both owner has to transfer the payment in the company, but विक्रम भट्ट और उसकी वाइफ ने डॉक्टर अजय को क्या कहा कि यू हैव टू मेक सम वेंडर को आप डायरेक्टली पे कर दो अपने अकाउंट से. और जब वो बाद में पता चलता है कि वो जो वेंडर था, ही वाज नॉट अ रियल वेंडर, ही वाज द ऑटो ड्राइवर, ही वाज द लाइक बस कंडक्टर, ही वाज द सम लो पर्सन, एंड ऑल मनी. सपोज दैट डॉक्टर अजय को ये बोला गया कि यू हैव टू ट्रांसफर 10 लाख रुपीज टू मिस्टर मनीष. पता चला मिस्टर मनीष टुक टुक चलाता है, and Mr. Manish has withdrawn 9,50,000, and that 9,50,000 has been transferred to Vikram या उसकी वाइफ सर्वराजित भट्ट को दे दिया. तो इट इज द फ्रॉड. तो आफ्टर दैट 17 नवंबर को डॉक्टर अजय ने कंप्लेंट रेज किया, एंड आफ्टर दैट राजस्थान पुलिस ने डॉक्टर विक्रम भट्ट को अरेस्ट कर लिया. तो यहां पर क्या है कि नेवर मेक एनी वन वेंडर व्हेन यू आर मेकिंग द पार्टनरशिप विथ एनी रिलेटिव एनी वन, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सेइंग कि कंपनी अकाउंट में डोंट प्रोवाइड, कैन यू गिव द डायरेक्टली पेमेंट, देन नेवर डू. और यू हैव टू मेक, देन यू हैव टू डू विद द एग्रीमेंट होना चाहिए, यू हैव टू सी द डॉक्यूमेंट प्रोसेस, ये सब चीज होना चाहिए. इफ एनीबॉडी इज सेइंग कि नो देयर इज नो डॉक्यूमेंट and he will provide the work in the letter and he will give the bill later, then you have to take the precaution and you have to transfer money in company account or company account से पैसा जाए, so you can take the some credentials. otherwise तो वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं. वेंडर को पेमेंट हमेशा कंपनी अकाउंट से करें, ना कि अपने अकाउंट से करें. और MIS, when you are making when you have given the loan to anyone, you have to ask on the regular basis कि whether your company, whether this venture is working or not. If it is not, then you have to ask कि भाई what is the reason कि
आई हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे कर करके विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ रुपया ले लिया था. एंड ही दे हैव नॉट स्टार्टेड फिल्म, और दे आर नॉट रिटर्निंग मनी. तो दैट यू हैव टू आस्क कि MIS होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा पैसा कहाँ है और कैसा है. तो नाउ we have discussed about the physical fraud. Then we are aware the cyber fraud. So how we can stop? Suppose that there is the one call is coming to you कि your son is the arrested in the police station, and you have to transfer 1 lakh rupees, 10 lakh rupees, whatever the money, to in my account, so that I will release to I will release your son. The first of all, कोई भी 2 नंबर का पैसा बैंक के थ्रू नहीं लेता. सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आज तक क्या रोड पर आपने कोई रेड लाइट जंप किया हो, या कार चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे हो, तो कोई भी ट्रैफिक वाले ने अगर 2 नंबर का पैसा लिया, तो वेदर ही हैज टेकन इन द अकाउंट, नो, दे ऑलवेज टेक टेक इन कैश. तो ये आपसे 2 नंबर का पैसा बैंक से क्यों ले रहा है, ये आपको सोचना चाहिए. एंड डोंट ट्रस्ट एनी वन, ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई माइंड कि नहीं भाई, मेरा दिमाग क्या कह रहा है वो चीज. फिर they can give the some लालच to you, some don't be greedy, don't be needy, don't be panic. ये तीनों चीज आपके पास नहीं होना चाहिए. Cool and calm, always you have to be cool and calm. कि anyone, even your son is really in the police station, तो क्या आपके एक बार पैसा देने से छूट जाएगा? इतना आसान है. अगर मान लो कि my son committed some crime, my son has committed some crime and I am given the 1 lakh rupees, और my son will be the release. इतना आसान चीज नहीं है. अगर उसने रियल में कमिट किया है क्राइम, तो इट विल टेक सम टाइम. ओके, तो सो यू हैव टू कीप योर माइंड कूल एंड काम. सो इन कूल एंड काम इन्वायरमेंट यू कैन टेक द वेरी गुड डिसीजन, अदरवाइज योर मनी विल बी लॉस्ट. नॉट इंस्टेंट. जैसे होता है कि भाई 2 मिनट में कॉफी बनाना है, 5 मिनट्स में इंस्टेंट कॉफी. ओके, बट वी हैव नॉट टू टेक इंस्टेंट एक्शन. We have to be cool and calm, and we have to think, we have to discuss with the other, and after that we can take any kind of decision. Discuss with other. Once you got the such kind of the phone, just you have to disconnect, and you have to discuss with your family members, you have to discuss with your friend कि यार I got the such kind of the phone call etc, what I have to do. So most probably, you will discuss 1 2 3 4 5 person. So definitely someone give the some suggestion कि यार ये तो cyber fraud है etc. But in the today's scenario, what we are doing, we are not discussing with the anyone reason. यार हमें बेवकूफ समझेगा, या देयर इज सम प्रॉब्लम इज कमिंग टू मी, वंस आई विल डिस्क्लोज टू माय फ्रेंड, तो वो मेरे ऊपर हंसेगा. तो इफ यू हैव द सच काइंड ऑफ द थिंकिंग, तो आप लुटोगे ही लुटोगे. And last में apply role of nature. That I will say it is the last suggestion from my side to you. Suppose that you are going on road and I got the accident. Okay, blood is coming from my hand, leg, etc. everywhere. Or some uh, my hand or my everything in the store broken. Okay, now what is the need? I need first aid at the moment कि मुझे दवाई चाहिए, एक चाहिए, ये सब चीज मुझे चाहिए. But on highway or on road, whether I got the first aid or whether I got the medicine within the 1 minute, within the 30 seconds, no. At least I have to take 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes to reach any hospital. So just you have to think कि जहां पर जीने मरने का सवाल है, बिना दवाई के मैं जी नहीं सकता, where I have to wait at least 30 minutes. So how I am doing the such kind of the decision to transfer money within the 1 second, 2 seconds. So if you have the such kind of the thinking, and just you have to apply one and last one, apply rule of the nature, then nobody can uh, make fool to you, and your money, your wealth will be with you. So thank you everyone. You have listened me very patiently, and I hope कि I have given the some good knowledge to you or some tips to you.
And if you have any question related to fraud, related to money transaction, or related to this case study that I have to discuss, and if you have search Google News, then you will find this news related to it is the news of the yesterday, and in the today newspaper it is coming. So as the Savana ji asked to me the further topic, so just I was thinking it is the this topic is relevant for everyone. That's why I have taken this topic. So thank you everyone. If you have any suggestion, anything, you can ask to me. Manish, good evening. I Yeah. wanted to know which mode of payment, online payment is good. Is UPI? Is it Google Pay better or Paytm is better? No, ma'am. In the today's scenario, any UPI, whether it is the Bhim, Google, or Paytm, every UPI is the away right now. There is no such as the instances of the fraud. So you can make any transaction if it is a small money. But if it is a big money, like 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, so I will suggest to make the payment through check, or you have to make the net banking. Don't go for the UPI. That I will UPI is the good for the 100, 200, 5,000, 10,000, 20,000. But once the money is big, then you have to try to make payment through check on the counter, or you can make the by net banking. Okay, thanks. Where else can we have problems? Problem is that, ma'am, ki suppose that my relative has started business, and I'm just trust blindly on him, then it is the problem. Okay, I'm not saying ki we have not to help anyone. We have to help. We must be help, but we have to take care. Like anyone is saying कि Manish, give me the 1 lakh rupees in cash. मैं बोलता हूँ कि there is no cash in my hand. अरे चलो ना बैंक से कैश निकाल के आप मेरे को दे दो, because I need some cash. It's okay. If you need cash, तो I will transfer in your account. आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल के दो. तो if anyone suggesting to you कि आप अपने अकाउंट से कैश निकाल के दो, then you have to apply your mind. Reason is that cash में nobody can anybody can deny. Like मैंने आपको दिया और आफ्टर 1 month 2 month यू कैन से कि नहीं भाई 1 लाख रुपया तूने मेरे को दिया ही नहीं है, या यू हैव गिवन ओनली 50,000 एंड नो वन कैन बी like witness. So avoid cash transaction if anyone is saying. And one thing, suppose that your friend has come and he's saying कि Manish, I need 20,000 rupees. मैंने बोला okay. तो एंड ही सेइंग कि मनीष आप मेरे अकाउंट में नहीं दो, आप डायरेक्टली उस अकाउंट में दे दो जहां पर मैं बोल रहा हूँ. देन यू कैन से कि भाई आई नो यू, आई ट्रस्ट यू, आई कैन मेक द ट्रांसफर मनी 10,000, 20,000, 1 lakh, whatever the money to you, and whatever the location you want to say, you have to say. Reason is that suppose that you अपने भाई अपने फ्रेंड को ही बोल रहा है, और ड्यू टू सम रीजन वो ईडी के चक्कर में है, सीबीआई के चक्कर में है, या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम इफ उसको पुलिस पकड़ता है, तो आपके पास भी पुलिस आ सकती है कि टेल मी मनीष, what is the reason you have transferred the 50,000 to Mr. XYZ? Then you will say कि Mr. Ram is my best friend, he has suggested. जब राम से पूछा जाएगा तो he will deny. Then who will be the responsible? Because your bank is saying कि you have transferred to Mr. X and Mr. Ram will deny, तो ultimately बैंक जो ईडी वाले आपको कूटेगा. So that I want to say, you always try to make bank transaction or only to known person, not unknown. Okay. Awesome. Thank you, Manishi. You covered such an important topic because these crimes like cyber fraud, especially is some, money fraud also happen through bank. Like, what we have noticed, like on the Google, next to the bank name, the number which is given is not exactly that of bank, but it's a fraud number. So I also came across that. So there are so many ways you can get caught up. Yeah. Anyone want to share
your experiences or want to give any feedback? Meena ji, Naveen ji, Himshika, Uma ji. मेरा नाम No, I averted a Yeah. fraud about a year and a half ago. I say, now I don't pick up any number which is not listed in my phone book, which doesn't have a name, because it's all spam. They can just call you and scare you, and this is exactly, the number for fraud is 1930, right? To report a fraud, हाँ वो that अभी मेरे को याद नहीं, that I have to check, ma'am. 1930, I think it I is. think that Yeah, is if somebody tries that. 1930, yeah, ma'am. Mm. Yeah, a lot of senior citizens have been, duped for this. And इसमें मैम आई विल सजेस्ट ओनली वन थिंग कि जैसे वी आर इन होम, तो मोबाइल फोन को हमें नेट से डिस्कनेक्ट रखना चाहिए, बिकॉज मोस्टली सच काइंड ऑफ द कॉल इज कमिंग थ्रू द व्हाट्सएप। ओके, तो सबसे पहले वेन एवर वी डोंट नीड द इंटरनेट, हमें इंटरनेट यूज करना ही नहीं चाहिए। जब जरूरत हो देन यू कैन स्टार्ट, अदरवाइज ऑलवेज आप डिस्कनेक्ट रहे। तो वो उससे आपका एक फ्रॉड से बचने का संभावना बच जाता है। रीजन इज दैट सपोज दैट मुझे आपको कॉल करना है मैम, तो व्हाट इज द नीड टू मेक द व्हाट्सएप कॉल? कौन सा मुझे आपसे प्राइवेट ऐसा क्या कहता है हवाला का बात डिस्कशन है? व्हाई नॉट आई कैन मेक द नॉर्मल कॉल, जनरल कॉल टू यू। ओके, Because Manishi, the signals are bad. So sometimes people are even the common friends are calling on also on WhatsApp because direct signals are sometimes really bad. या आई गॉट योर पॉइंट कि समटाइम क्या होता है कि किस वी आर सिटिंग इन द यू कैन से द बेसमेंट और ऐसा, इफ देर इज सच काइंड ऑफ द इशू, तब तो इट्स ओके। अदरवाइज द नॉर्मल सिनेरियो होता क्या है कि आवर मोबाइल नेट इज ऑलवेज ऑन, 24 आवर्स ऑन होता है। उस पर मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि आप उससे थोड़ा सा बच के रहें। बाकी अल्टीमेटली मोबाइल आपका है, इंटरनेट का भी पैसा आप देते हो, और अगर गलती से फ्रॉड हुआ तो उसका भी पैसा आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। यस मनीषी, आपकी बात तो सही है, बट उसको ऑफ एंड ऑन करना इज अ चैलेंज। तो आप मेरे को जब व्हाट्सएप कॉल करते हो तो Signals की वजह से लोग करते हैं. But now if you are an Airtel subscriber, they हम्म, immediately tell you suspected spam. So you क्या just मैम? don't pick it up. So Yes. Airtel is very good that way. या And they will tell you it's spam. Just don't have to bother. डेफिनेटली मैम। या Himshika has unmuted and she want to share Yeah, something. yeah, yeah, yeah. No, Manishi, I want to say that this is a very good topic of bringing that awareness, right? Because we'll be so much busy with our personal or professional work, and like bringing this topic into reminder kind of thing. Okay, we have to be careful. So it's a good reminder. Yeah, that's Yeah, why I want to say thanks. Yeah, thank you, Manishi. thank you, ma'am. Anyone, any other person, any comment, any suggestion, any discussion, anything? आपके साथ हुआ है कुछ? मैम मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आया था 1 ईयर बैक, 1 साल पहले आया था। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम नेट ऑन था, मतलब व्हाट्सएप था, तो आई गॉट द व्हाट्सएप कॉल। आई हैव नॉट सीन कि ये न फोन कहाँ से आ रहा है, जस्ट आई हैव द पिकअप, वॉइस कॉल था। तो ही कॉल्ड मी कि मैं दरियागंज थाने से बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी बताइए सर। नो डाउट मैं भी डर गया था, बिकॉज मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ हो सकता है। बट इन द नेक्स्ट लाइन ही वाज सेइंग कि हमने 3-4 लड़के को पकड़ा है और ही इज टेकिंग योर नेम, एंड वो रेप के केस में अंदर हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज से 8-10 साल पहले कुछ हमारे यहाँ होम टाउन से कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आता था एग्जाम देने के लिए, समवन कमिंग टू गिव द एग्जामिनेशन और एनीथिंग, तो वो होता था। अब पिछले 3-4 साल से वो चीज खत्म हो चुका है। तो जैसे ही उसने बोला कि कुछ लड़के आए हैं और उसने रेप के केस में पकड़ा है और आपका नाम ले रहा है, तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि ये मतलब कि फ्रॉड है। तो मैंने बोला कि मेरा नाम क्यों लिया? तो बोला कि हमने उसको मारा। तो बोला वो आपके यहाँ रह रहा था। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरे यहाँ तो कोई रह रहा था। मैंने बोला कि जब आपने 2 झापर मारा तो मेरा नाम लिया, मेरे तरफ से 5 झापर और मारो तो हो सकता है किसी और का नाम ले लेगा। तो वो समझ गया, फिर ही हैज डिस्कनेक्टेड कॉल। तो आफ्टर दैट आई हैव सीन कि ये दिस नंबर वाज फ्रॉम द 92, मतलब पाकिस्तान से इट वाज द रूटेड।
मतलब वो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये आ रहा है। लेकिन ठीक है, समहाउ मैं फंसा नहीं, लेकिन कॉल मेरे पास भी एक बार आ चुका है। हाँ, ऐसे ही तो मेरे पास आया था। एंड दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म इन द व्हाट्सएप, यू सी यूनिफॉर्म, एंड हाँ जैसे हम थाना से बोल रहे हैं, you हाँ। know, and they're saying, oh, your daughter is here, she's done. They say, what? My daughter is. I said, no, she's. This. I said, she's home. Acha, baat kar rahi hai. And my daughter knew even before I got her on the line. She's saying it's a fraud. Just put it down. She knew it. All these kids. नहीं, एक्चुअली मेरे को भी ऐसे आया। मेरे को ये मतलब इसका एक कॉल का एक पैटर्न है। ये लोग क्या करते हैं, पहले तो एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं कि ऐसे लगता है कोई पिक्चर का स्टोरी बिल्ड हो रहा हो कि अरे सर आपके नाम पे ना कोई पार्सल आया है और उसको गलती से पुलिस थाने में दिया गया है क्योंकि उसके अंदर कुछ सस्पिशियस मटेरियल है, तो पुलिस वालों के पास है, अभी आपके एक्शन हो जाएगा ये वो करके। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम तो कोई भी बता सकता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताना शुरू कर देते हैं। अब आप क्योंकि फंस गए हो, आपको ये करना पड़ेगा करके जैसे ही वो सॉल्यूशन बताने का कोशिश करते हैं, समझ जाना चाहिए कि ये कुछ फ्रॉड ही है। क्योंकि प्रॉब्लम तो अगर पुलिस से कोई प्रॉब्लम होगा तो पुलिस वाला आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताएगा, उसका सॉल्यूशन क्यों बताएगा। और तो सर जैसे ये रियल। सॉल्यूशन बताते हैं, फिर धीरे हाँ धीरे वो सॉल्यूशन जाता है पैसे का पेमेंट का तरफ। हाँ, बस बस बस। और जैसे ही वो पैसे का पेमेंट की तरफ जाता है, उसमें बड़ा क्लियर है कि ये फ्रॉड है। मतलब अगर आप, वो बेसिकली ये पूरी कहानी बनाता है क्योंकि आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। हम्म। और जैसे ही वो बोलेगा कि अब सर आप इससे निकलने का एक तरीका है, आप ऐसा करो, थोड़ा पेमेंट करो, उसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे क्या। तो जैसे ही वो पेमेंट की बात आती है या सोल्यूशन की बात आती है, इट इज अ कंफर्म्ड फ्रॉड। मतलब तो बस यही सोचना है कि आज तक मैंने 2 नंबर का पैसा हमने भी दिया है, चाहे वो डिपार्टमेंट में हो, ट्रैफिक पुलिस का हो या एमसीडी का हो। तो आज तक तो हमने 2 नंबर का पैसा या घूस का पैसा तो कैश में देते हैं। तो आज कौन सा ऐसा आदमी पैदा हो गया है, सरकारी ऑफिसर, कि घूस का पैसा बैंक में ले रहा है? तो इतना सा सोच लेंगे तो हम बचने का बहुत सारे चीजों से बच सकते हैं। No, I think they are duping people who are not very savvy with the banking. I know a very rich lady, an older woman. उसका उसका तो बहुत ज्यादा 50 lakhs she got ripped एक्चुअली off. अब इसमें एक चीज और आ रहा है मैम, कि इसमें बहुत सारे बैंक वाले भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज बैंक बैंक हैज लीक द इंफॉर्मेशन कि इसके अकाउंट में इतना पैसा Very. है। हाँ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन वी हैव टू अवेयर, और हम अपने आप को संभाल के रखें, वही सही चीज है, नथिंग एल्स मैम। Yes, Manish. In recent, though, there was on WhatsApp, like people were sending messages like to pay, like as a gift, or to pay in the account or something, like have to don't have money or something. And after some time, you realize it's not the message by the same person, but the WhatsApp was hacked. So वो भी हो रहा है काफी। वो रिसेंट है, वो मैंने कई सारे 2-3 लोगों से मेरे पास मैसेज वो आया। मतलब तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि आप डोनेशन दीजिए क्योंकि यहाँ कोई बीमार है या इसके घर में खाना मिल नहीं रहा है कुछ, हाँ ये सब भी अब आज समझ में नहीं आता ये सच है झूठ है क्या है। हाँ। हाँ, सर, आजकल तो काफी सारे इसमें डोनेशन वाले सर आते हैं। एक चीज बताऊं नवीन सर, अगर आप दिल्ली या कहीं भी शहर में हो, आज से 10 साल 15 साल पहले, जैसे मैंने 2-3 आईटीओ पर, मैं जब लक्ष्मी नगर में था तो आईटीओ पर जा रहा था, तो एक फैमिली पैसा मांग रहा था कि वी हैव टू गो द एम्स, और पैसे नहीं है। चलो मैं पहला बार था तो मुझे नहीं समझ, मैंने 10 या 20 रुपया, 2002-3 की बात है, दे दिया। मैं कनॉट प्लेस से घूम के कुछ काम उम करके आया, आधे घंटे के बाद दूसरी बस है, अगेन आई वाज सीइंग कि वो आदमी फिर दूसरे बाइक वाले या कार वाले बस वाले से मांग रहा था। तब मैंने डिस्कस किया एक दो लोगों से, तब बोला कि अरे ये लोग हाँ, इसी मैंने तरीके से मैंने करते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसी वाला एक बॉम्बे में भी देखा, मेरे खुद के साथ भी हुआ है। मैंने एक ओल्ड कपल खड़ा हुआ था, वो बोला हाँ। हमारे पास सामान है, हमारे पास बस में जाने का टिकट नहीं है, तो मैंने दे दिया उनको टिकट का पैसा। थोड़ी देर के बाद देखा वो गए ही नहीं है, किसी और को टिकट के लिए पैसे मांग रहे थे। तो वही चीज है कि ये ना, देखिए, ये पूरे मतलब कि आप ध्यान से लाइफ को देखोगे ना सर, तो हिस्ट्री में मतलब कि 10 साल 15 साल पहले कुछ हुआ है, बस उसी चीज को दूसरे फॉर्म में चेंज होके आ रहा है। तो हमें बस दिमाग उतना ही खुल के रखना है कि क्या कई पहले बार ऐसा ऐसा भी चीज। लगता है ना कि हम लोग क्या इंडियंस क्या, हम लोग हर चीज में थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं,
लगता है यार खड़े हुए हैं, चलो ठीक है कुछ दे ही देते हैं। अब हो सकता है गरीबी में चोरी, चोर भी तो गरीबी होता है, मजबूरी में ही चोरी करते हैं लोग। एक हाँ, ये भी एंगल है देखने का। वो बात तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या करें। बट देर आर स्टडीज नवीन जी कि वो लोगों की इनकम आप हम लोगों से बहुत ज्यादा है। मैडम अब ये होने को तो ये हो सकता है, बट डाका डालने वाले मतलब गरीब, मतलब अब उसके पास रोटी नहीं होगा मतलब खाने को, ये हो सकता है। मतलब हम इसी एंगल से, अब हाँ बुढ़ा कोई, नहीं मैंने तो एक्चुअली जेन्युइनली मैंने मतलब देवर एन ओल्ड कपल। अब एज को तो आप छुपा नहीं सकते, बुढ़ा बुढ़ी खड़े हुए थे वहां सूटकेस लेके। हम्म, क्या करेंगे अब, मैं उस एंड मांगा कितना, उन 200 100 200 मांगा, तो मैंने कहा यार चलो गया तो गया, मतलब सच है झूठ है, अब गया। वो बाद में देखा वो घंटे भर बाद में गलती से फिर से उसी रास्ते पे आया, वो फिर मांग रहे थे। तो मुझे लगा यार ये कितने लोगों से बस का टिकट का किराया मांग रहे हैं। उतने में फ्लाइट की टिकट आ जाए। Thank you, Manish. It was really wonderful. Thank you for sharing. चलिए, ओके मैम।